Hope you all waiting. So, without any further ado, we'll start our class. Today, we'll learn about the positive and negative sentences. लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक सेंटेंस बनाना सीखा है एंड परसों के क्लास में वी लर्नड अबाउट हाउ टू बिल्ड क्वेश्चंस. Now we'll learn about positive and negative sentences. पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस इज नथिंग बट एक अच्छा सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस इज नथिंग बट अ नेगेटिव सेंटेंस. Positive sentence we use when we are complimenting something or saying good about something. We use the positive sentences. Negative sentences क्या है? जैसे कि कुछ हम लोगों को नहीं पसंद या कुछ चीज है जो बुरी है, तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस अफर्म और स्टेट समथिंग इज ट्रू. They are used to declare facts, describe events, or express opinions in a positive manner. These sentences often follow the structure subject plus verb plus object or complement. So here they are saying is a positive sentence क्या है? कुछ भी चीज जो सच्चाई है वो बताने के लिए हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हैं. Either we can declare the fact. Declaring the fact is nothing but हम लोग ये fact declare कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं. Describe an event as in जो event हुआ है उसे हम लोग बता रहे हैं. और express an opinions in a positive manner. आप किसी को कोई ओपिनियन दे रहे हो एंड इट्स इन अ पॉजिटिव मैनर, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ. सो कैसा स्ट्रक्चर आता है पॉजिटिव सेंटेंस का? एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है. सब्जेक्ट इज नथिंग बट जो भी जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट है. वर्ब विल बी एक्शन, वहां पर जो भी एक्शन हो रहा है वो है. और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. सो एग्जाम्पल, शी लव्स रीडिंग बुक्स. सो ये क्या हुआ? पॉजिटिव सेंटेंस हुआ. दे आर गोइंग टू द बीच. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. यूजुअली जो भी नॉर्मल सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं. मेन चीज आपको यहाँ पर फोकस करनी है नेगेटिव सेंटेंसेस पर. जस्ट अ सेकेंड मम्मा. And then we'll see about the negative sentence. Negative sentences deny or state something which is not true. Often the words like not, no, never, or none to negate the action or state described in the sentence. The structure usually follows subject plus auxiliary verb. Auxiliary verbs क्या है? Do, does, did, is, was, were, have, has और had. जैसे कि हम लोगों ने बेसिक सेंटेंस सीखा था एंड क्वेश्चन के इसमें भी हम लोगों ने auxiliary verbs सीखे थे. Same thing plus not plus main verb plus object plus और complement. Here ये स्ट्रक्चर को आप भूल जाए. Don't see this structure. ये जो स्ट्रक्चर वाली चीज है ना, डोंट से दिस. अगर आप इसे देखने बैठ जाएंगे देन यू विल बी मोर कंफ्यूज्ड. सो बेसिक वे में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस क्या है? अगर कोई चीज को आप मना कर रहे हैं देन दैट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस. Example, does she not love reading books? Why are they are not going to the beach?
द सन इज नॉट शाइनिंग ब्राइटली। यहाँ पर क्या है, डज नॉट आया है, दे आर सेइंग नहीं, यहाँ पे नॉट है, नेक्स्ट सेंटेंस में भी नॉट है। द सन इज नॉट शाइनिंग ब्राइटली, यहाँ पर भी नॉट है। सो दे आर डिसएग्रीइंग टू ऑल दिस सेंटेंसेस। उसे बुक पढ़ना पसंद नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखें, शी लव्स रीडिंग बुक्स। व्हेन दैट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस, it becomes she does not love reading books. Next example you see, in positive sentence they are going to the beach. यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में दे आर नॉट गोइंग टू द बीच। यहाँ पर क्या है, बोल रहे हैं दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। सो वॉट एवर यूर डिसएग्रीइंग ऑन, तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, किसी भी चीज को आप नो, नेवर, नॉट, नन, whatever with the no thing you use, no, that is a negative sentence. Key difference is affirmation versus negation. Positive sentence affirm action or states, whereas negative sentence negate them. यहाँ पर affirmation क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में जो है वो बताया जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो है वही बताया जा रहा है, बट विथ a negative response. Auxiliary verbs, negative sentence often require auxiliary verbs and have word not to negate the main verb. So, auxiliary verbs negative sentence में must है, whereas a positive sentence में auxiliary verbs, you don't find auxiliary verbs in positive sentences, but in negative sentences there you should, must and should है, auxiliary verb आता ही आता है। Any negative sentence you take, there comes a no and a auxiliary verb. Purpose, positive sentences are used to state facts or opinion positively, while negative sentences are used to deny or contradict something. Understood? See, here I have given the example. Positive sentences, she loves reading books. She does not love reading books. They are not going to the beach. They are going to the beach. They are not going to the beach. The sun is shining brightly. The sun is not shining brightly. So these are positive and negative sentences. यहाँ तक clear है? Chat box में please response दें. Is it clear to everybody about the positive and negative sentence? Okay. तो building positive sentences कुछ नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं ना, वैसे ही सेम, देर इज नो डिफरेंस इन building simple sentences and positive sentences. Both are one and the same. जी, नाजनीन इज आस्किंग मी टू एक्सप्लेन वन अगेन। देखो नाजनीन, एक पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, एक नेगेटिव सेंटेंस रहता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, जैसे कि एक किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, या जो हो रहा है उसे बताना, या जो हो चुका है उसे बताना। देर इज नो फॉल्स इंफॉर्मेशन or disagreeing in the positive sentence, whereas in negative sentence you can either lie, like false चीजें आप बता सकते हैं, या यू कैन डिसएग्री टू समथिंग। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है, तो दैट डिसएग्रीइंग इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस इज नथिंग बट अ सिंपल सेंटेंस, बट नेगेटिव सेंटेंस इज नथिंग बट वी आर नॉट एग्रीइंग, दैट इज अ पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव होता है। सो वेन एवर यू डोंट लाइक समथिंग और यू कांट बी अराउंड समथिंग, वॉट एवर इट इज, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, दैट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे हम लोग नॉर्मल बेसिक
सेंटेंस क्रिएट करता है ना, सब्जेक्ट उसका वर्ब, और अगर आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट इज एन ऑब्जेक्ट, वो लेकर आप सेंटेंस सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। वेर एज नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग एक्सिलरी वर्ब दैट इज डू डज वैसे वर्ब्स है ना, वो यूज करके, एंड द वर्ड नो नॉट नन, जो भी नो के वर्ड है, नो नन वैसे वर्ड्स यूज हुए तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब एंड एन ओ वाले वर्ड्स यूज करते हैं। नाज़नीन क्लियर है? नाउ बिल्डिंग पॉजिटिव सेंटेंस देखें। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, चूज द वर्ब, एड एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट, कंबाइन देम इनटू अ पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने बोला, पॉजिटिव सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस में उसमें कोई कुछ डिफरेंस ही नहीं है। दे आर वन एंड द सेम। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, आइडिया और अ थिंग। एग्जाम्पल, द कैट। चूज द वर्ब, the verb is an action word to state or a state of being. So example यहाँ पर place है। एड एन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट करें, अगर ऑब्जेक्ट एज इन उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो हियर द कैट प्लेस विद द बॉल, combine them into a positive sentence. The cat plays with the ball. So positive sentence, very simple and very clear। यहाँ पर हम्म यहाँ पर डोंट से दिस, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। सिंपल स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, वर्ड, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। विथ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स कैसे करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब plus object plus or complement. The teacher clearly explains the lesson. This with adjectives and adverbs. If you attended the grammar class and if ma'am has finished this topic of adjectives and adverbs, you'll know. Um, क्या मैम has cleared this grammar में adjectives and adverbs? Okay, whatever it is, it's a call. But you all see, ये सिंपल स्ट्रक्चर ही आप फॉलो करें। व्हेन you'll know, as I'm continuously saying this, simple basic sentences जो है वही पॉजिटिव सेंटेंस है। there is nothing rocket science in this, it is easy as it says। example, the she sings beautifully, so here subject is sings, sorry, she is subject, sings is a verb and beautifully is a adverb। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह से मैम कल ही एक्सप्लेन किए हैं इट सिम्स। सो एडवर्ब इज नथिंग बट एड्स अ मीनिंग टू अ वर्ब। जो भी वर्ब को हम लोग और ब्यूटिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं। विद द कॉम्प्लीमेंट, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। द फ्लावर इज अ सब्जेक्ट, आर इज द वर्ब, blooming is a complement, in the garden is the object। practice exam sentences, the dog runs swiftly, John enjoys reading, the team wins the game। So homework is in तीनों का, you have to say what is a subject, what is a verb, what is an object or complement, or if you know adjectives or adverbs you can mention that too। if you don't know then only mention subject or verb, or it is an object or a complement। okay, this is your first homework। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, only this part, only this part। done? okay।
इसके पहले का नहीं सिस्टर, बस इसी जो होमवर्क है ना, इसके लिए स्क्रीनशॉट लेने बोली मैं आपको। ये आपका होमवर्क है, 3 जो सेंटेंसेस है ना, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, या ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपको एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स का पता है, देन यू कैन मेंशन दैट। ओके, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर वन ऑफ द होमवर्क ऑफ टुडेज। देन building a negative sentence. Start with the positive sentence. Think about a simple positive sentence. She likes apple. And not to make it a negative. To make the negative sentence, add not to the action word. She does not like apples. So here likes is a verb. So does not like. इससे ये वर्ब के पहले अगर आप एक्सिलरी वर्ब और नॉट ऐड करें, देन इट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, आई ईट पिज्जा। नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट ईट पिज्जा। पॉजिटिव सेंटेंस, दे प्ले फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। Positive sentence, he likes ice cream. Negative sentence, he does not like ice cream. Positive sentence, we watch movies. Negative sentence, we do not watch movies. So here, I eat a pizza is a simple sentence plus a positive sentence. What I have did, what I have did here, I जो verb है, verb क्या है, verb is nothing but a action word. Verb के पहले I added a auxiliary verb and a no word. So this becomes a negative sentence. Do not. और short form में you can also write don't. D, ये दोनों combine, do not combine होके don't eat pizza भी बोल सकते हैं। They play football, they do not play football. See, every positive sentence, सभी positive sentence देखें, and जो भी उसके verb है, जो भी उसका वर्ब है, उसके पहले एक एक्सिलरी वर्ब आता है एंड एक एनो का वर्ड आता है, देन दैट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। So, tips on building the negative sentence. Use does not for he, she, or it. Example, if the subject is he, she, or it, use does not. Example, she does not dance. यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं, समथिंग विच इज नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स, हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं, बट वी आर डिनोटिंग दम एज अ ही अगर मेल है, शी अगर फीमेल है, इट अगर कोई चीज है, तो यूज द वर्ड does not. You have to use the word does not when we are using pronouns, or we are saying in a indirect speech, he, she, or it. Example, she does not dance. Use do not for I, you, we, or they. If the subject is I, like you're saying about yourself, or you're talking a direct speech to somebody else, we or they, use do not. Example, I do not sing, or don't you sing, or use the sentences whenever we found I, you, we, or they, use do not. Keep it simple, focus on the action and the make it negative. They do not run. So क्या कुछ नहीं करना है आपको, एक्शन पर फोकस करना है, जो भी वर्ब है वहां पर उसके पर फोकस करके उसके पीछे does not आए तो does not, do not आए तो do not, whatever आप डाल के उस वो सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं। Here more examples I have given. Positive sentence, a cat sleeps on the sofa. Negative sentence, a cat does not sleep on the sofa. Positive sentence, you play the piano. Negative sentence, you do not play the piano. यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है, does not यूज करना है, do not यूज करना है, सिंपल चीज करें,
पॉजिटिव सेंटेंस लें, जैसे कि शी राइट्स लेटर्स। यहाँ पर आप दोनों ऐड करके देखें। शी डू नॉट राइट लेटर्स एंड शी डज नॉट राइट लेटर्स। सी विच विल साउंड प्रॉपर। यूजुअल इंग्लिश में sounding proper also helps you to a lot to framing the sentence. ये this is not a, क्या बोलते हैं, ट्रिक नहीं है ये कोई, बट इनिशियली यू कैन, जब तक आपको याद नहीं होता है ना, इनिशियली यू कैन डू दिस थिंग। एक सेंटेंस लें, डज नॉट और डू नॉट दोनों ऐड करके देखें, विच साउंड्स परफेक्ट, यू सी इफ दैट इज करेक्ट। ओके। Positive sentence, we travel by bus. We do not travel by bus. Positive sentence, he drinks coffee. He does not drink coffee. Okay, clear? Okay. तो आपका दूसरा होमवर्क क्या है? एक 3, नॉट 5, 3 sentences का आपको बनाने हैं, पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव। फर्स्ट फ्रेम अ पॉजिटिव सेंटेंस, देन मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। एंड हियर ट्राई बिल्डिंग एक थोड़ा ज्यादा बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए ट्राई करें। सी, डोंट जस्ट मेक सिंपल सेंटेंस लाइक आई ईट दिस, आई डू नॉट ईट दिस, और I like this, do not like this, or she does not like this. Don't make this simple sentences. आपने पहले exercises में ये simple sentence practice किए हैं until I am there. थोड़े बड़े sentence try करें. So I'll check, अगर आपको कुछ confusion है तो आपका doubts भी वहाँ पर clear हो जाएंगे. Okay? Auxiliary verbs I'll explain you all once again. सी, यहाँ पर auxiliary verbs क्या है? The, do, does, did, can and will. Auxiliary verbs are nothing but एक verb को support करना is an auxiliary verb. ये करता है, ये नहीं करता है। हम लोग do, does, did, can and will. Do usually फ्यूचर टेंस में यूज होता है, does प्रेजेंट में यूज होता है, did पास्ट में यूज होता है। अगर आप बहुत डेप्थ में चले जाए ना, मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, बट यू रिमेम्बर एक्सिलरी वर्ब इज नथिंग बट एक सेंटेंस को दैट गिव्स द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देके, सी, हेल्प्स फॉर्म द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन भी डाल सकता है या नेगेटिव सेंटेंस भी बिल्ड करने के लिए यूज कर सकता है। दिस ओनली हेल्प्स। डू इज द फॉर्म ऑफ फ्यूचर, आई विल डू, ऐसे बोलते हैं ना, आई विल डू, फ्यूचर टेंस हुआ। और इवन प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है, आई डू दिस, और इफ यू आर सेइंग आई डू दिस फॉर माई जॉब, सो प्रेजेंट टेंस भी यूज होता है, एंड यू आर ऑल्सो सेइंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए यूज होता है। सो नथिंग, आपको इतना याद रखें आप, डू, डज, डिड, कैन एंड विल आर एक्सिलरी वर्ब। ओके, क्लियर? हाल आ जाओ। ओके, आज का होमवर्क भी सबको समझ आ गया ना? जो 3 सेंटेंसेस थे, ये वाले जो लास्ट 3 सेंटेंसेस है, उसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, अगर आप एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को जानते हैं तो you can even write that. If you do not understand, leave it, no worries. सी, यहाँ पर does कहाँ पे यूज होता है? ही शी,
प्रोनाउंस जब भी आते हैं तो does यूज होता है. ओके, नो डाउट्स राइट. इस बार अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है, प्लीज वो स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में शेयर कर दें. मैं उसके नीचे वॉइस नोट भेज दूंगी. जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको तीन. एक पॉजिटिव बोलना है, एक नेगेटिव. सी यहाँ पर कैसा है, आई द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा, द कैट डज नॉट स्लीप ऑन द सोफा. पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव सेंटेंस लिखे, नेगेटिव के सामने नेगेटिव सेंटेंस लिखे. बट ट्राई बिल्डिंग थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर सेंटेंसेस बनाने का कोशिश करें. डोंट बिल्ड सिंपल सेंटेंसेस. पहले के एक्सरसाइजेस में आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह से. तो जी जी, तीन ही सेंटेंस. If you want to build more, that is your choice. Homework is of three sentences. तो अगर आपको कुछ डाउट है या आपका डाउट क्लियर करने के लिए चाह रहे हैं आप, तो होमवर्क ग्रुप आप होमवर्क करें थोड़े ज्यादा बड़े सेंटेंसेस का. तो आई चेक एंड आई से इफ यू हैव टू मेक एनी करेक्शन. होमवर्क, अच्छा, आप होमवर्क ग्रुप ही सेंड करने के लिए आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करिए सिस्टर को. सर मेरा नंबर है ग्रुप में. जी सिस्टर फराह सुल्ताना, आपको ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट आएगा. उसका तीन सेंटेंसेस हैं उधर. वहां पे आपको सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है वो बताना है. एंड यू हैव टू बिल्ड थ्री सेंटेंसेस, बोथ ऑफ ईच ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव के तीन, नेगेटिव के तीन. जी जी, विल एंड द क्लास ना. किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? ओके. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.